Hello everybody, welcome back to Fenil Shah channel. So we are here with part 2. So let's start. We are now today, means right now we are going to do chapter 2. The Union Executive. Okay. Here right now we need to learn that the president, ठीक है, let's begin. The president पे गोला बनाते हैं. Highest executive head, ये याद रखने की ज़रूरत है ऑफ इंडियन यूनियन. भाई हमारे president is the highest executive head of the Indian Union. In a parliamentary democracy, the president, as the head of the state, enjoys only nominal powers. ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास ओनली नॉमिनल पावर्स है. बट द रियल पावर्स आर इन द हैंड ऑफ अवर पीएम, प्राइम मिनिस्टर. अब लोग थोड़े पूछते हैं भाई ऐसा क्यों, क्योंकि this is what is provided by our constitution. अब what is the qualification for the president? Okay, big problem में आ गए हैं हम. Yes, so I'm back. So the qualification for the president we were going to see. So let's see. एक तो सब में कॉमन है ये, सिटीजन ऑफ इंडिया. लोग राज्य में 30 ईयर्स थे तो इसमें 35 ईयर्स एंड एज अब होना चाहिए. कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिटिंग ऑफिस. आई जस्ट राइट द की टर्म्स, यू नो. नाउ व्हाट इज, ये बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन आया है. राइट इट डाउन इफ यू वांट टू. Composition of electoral college. ये बहुत बार आया है and students do not know what is the answer. पहले तो आएगा elected members of both houses लिखते हो तो भाई houses, ठीक है. फिर आते हैं हमारी सबसे इम्पोर्टेंट elected members of the legislative assembly के members, ठीक है. फिर आगे आप आएंगे हमारे nominated members of both the houses and the nominated members of the legislative assembly of Delhi and Pondicherry. They do not participate in the election of the president. They do not. किसमें? I'll repeat. The nominated members of the legislative assemblies of Delhi and Pondicherry do not participate in the election. ठीक है, so this is not much important according to me. So मैंने नहीं करवाया. अब एक ये भी बहुत आता है ये क्वेश्चन, दो वी आर डूइंग दी चैप्टर, पर इसके अंदर ही एक लाइक टॉपिक्स इंक्लूडेड है. रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन. भाई वाई? This is a very important question which has been coming since years. This question has been coming. So what you'll write as, देखो, I'm just writing the topic का name. Why? So that you write the answer by yourself. इसका answer you can write as, India has a parliamentary form of government. The president here is the nominal head. आगे देखा था, nominal head of the country, and thus he or she is elected indirectly. Additionally, indirect election of president in India can be justified on the following grounds. अब देखते हैं क्या. It would be an anomaly if the president is elected directly by the people, as he does not enjoy real powers. The inclusion of members of legislative assembly in the electoral college makes the president the elected representatives of the whole nation. A clear voice would be given. इसलिए पता चला, many things are there which we need to remember.
अब ओथ ऑफ ऑफिस नहीं है, टर्म है. टर्म सबका ऑलमोस्ट 5 years होता है, ऑलमोस्ट. इसका भी 5 years है. अलॉन्ग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का. हाँ, फिर हम आते हैं अब प्रोसीड्यूर ऑफ इम्पीचमेंट. कैसे होता है? द चार्जेस इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस और 14 days नोटिस शुड बी गिवन. 14 days नोटिस शुड बी गिवन. आई विल हिट इम्पीचमेंट हियर. 14 days notice should be given to the president in writing, signed by at least 1/4 of the total members of the house that has framed those charges. Are you guys everyone understanding? Bacha. After the lapse of 14 days. After the lapse of 14 days. A resolution is moved which is to be passed by a majority of not less than 2/3 majority of the total strength of the house. The resolution then moves to the other house. मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई दूसरे हाउस में ये जाएगा. which would investigate the charges during the process. The impeached president has the right to appear. क्या होता है? Right to appear and to represent himself in such investigation के वक्त. If the resolution is passed by the second house by majority not less than 2/3 total membership of the house, the president will stand impeached and removed from office. अब आता है very important thing, that is powers and functions of our president. Very important, bachcho. Okay, so I don't think so I must explain you. I'll just write down which all are there in our syllabus. Executive, you just read through them. सब में 4 याद रखना, बस उससे ज़्यादा मत like मत्था कुट करना, I must say. Then we have legislative, discretionary, and let's come. This is important, so I am going to do this. ये भी important है, पर I don't want to waste time on this. इमरजेंसीज, ये भी एक पावर है, पर इमरजेंसी को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. ये हम रफ आइडिया देते हैं. एक तो है नेशनल इमरजेंसी. वो एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण होती है नेशनल इमरजेंसी. I hope you all are understanding what I'm saying. अब सेकंड में आएगा हमारे साथ, वो है प्रेसिडेंट का रूल. मैं लिखूँ या ना लिखूँ पता नहीं चल रहा है, बट आई एम राइटिंग. दिस इज नोट्स विच आई हैव, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम दैट. प्रेसिडेंट रूल. एंड थर्ड इज फाइनेंशियल. आई थिंक सो फाइनेंशियल इमरजेंसी हुई है until like I know. Search it on Google and tell me in the comment section. ठीक है, ये 3 है. ये तो मैंने बोला एक्सटर्नल एग्रेशन. प्रेसिडेंट रूल इन एनी कैटास्ट्रॉफी में होती है, और ये फाइनेंस के कारण, पैसे ख़त्म हो जाने के कारण होती है. अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. यही चैप्टर पर सेकेंड पार्ट, द वाइस प्रेसिडेंट. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे. एक तो है क्वालिफिकेशन क्या होता है? वो स्टैंडिंग. एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया. सिटीजन 35 years, qualified as Rajya Sabha.
राज्यसभा के जो भी क्वालिफिकेशन है वो भी मीट होने चाहिए. कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज में भी लाइक उसमें भी वाइस प्रेसिडेंट एक मेंबर होते हैं. उनका टर्म क्या होता है? टर्म 5 years. इम्पोर्टेंट. रिमूवल सेम लाइक दी प्रेसिडेंट. सेम लाइक प्रेसिडेंट. अब फॉर एग्जांपल इन्हें रेजिग्नेशन देना हो, प्रेसिडेंट को रिसाइन करना हो, तो कैसे करेंगे? प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे और वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे. अब इनके पावर्स एंड फंक्शंस देख लेते हैं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ ऑल दी ऑफ दी अपने क्या है ये ऑफिसियो ऑफ राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस एज दी राज्यसभा मेंबर्स एंड एज दी स्पीकर इन द लोकसभा. हिज सैलरी इज पेड इन हिज कैपेसिटी. कितनी कैपेसिटी है उस पर. देन when president cannot discharge, president officiate in his place. If for any reason the office of the president falls vacant, then the vice president can officiate for 6 months, within which time fresh elections for the post of president must take place. During this period, when he or she is acting as president, she cannot discharge or perform duties of the office of chairman of the Rajya Sabha. Means ये ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर सकते जब वो प्रेसिडेंट होते हैं. मीन्स जब प्रेसिडेंट के ना होने पे से वो उनकी सीट लेते हैं तब ही कैन नॉट परफॉर्म दी ड्यूटीज एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. सो या वाइस प्रेसिडेंट ड्रॉज ऑल द इमोल्यूमेंट्स एंड सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट. उन्हें प्रेसिडेंट जितनी ही सैलरी दी जाती है जब वो एक प्रेसिडेंट बनते हैं तब. Okay, so here we have come to the end of this chapter. Chalo fatapat, I'll just give you some important 3 questions which will test your knowledge. Okay. Very important question 1. How is president elected? How is president elected? Then I'm giving you long questions, long. Explain the removal process or process of impeachment. Done.